Good evening, friends. Thank you again for joining with us in another session of Ab India Karega Invest. And I am Rishabh Lunia, and today joining with me is Mr. Sorbh Gupta, fund manager equities with Quantum Mutual Fund, and Shikhar Singh from Groww. So the topic is very trending. Rishabh, I think your mic is muted. Just give me a sec. I think there's some technicals. Yeah. So again, welcome everyone for this yet another session of Ab India Karega Invest. And today's topic, as we come closer to the year end and HR managers start asking about the tax slips, people start getting worried about whether they have saved their tax in the manner they wanted to do or not. So today we are going to touch upon tax saving and harvesting. The topic which are very relevant at current stages with there are pressures on savings. Probably saving some on the tax front will not harm anyone. So the flow of the session will be like this. I will start with tax harvesting as a topic, and then I will hand it over to Mr. Sorbh Gupta, who will take us through various avenues of how to save tax using mutual funds and what are the various tax efficient way to invest in our markets. And then we will go to Shikhar, who will talk about the Groww platform. So that will be the flow. But if you have any questions, if you have any doubts throughout the session, don't forget to put them on the comment box. We will be taking all the Q&A at the end, and we will want to answer all your questions once all the speakers are done with their topics. So let me start the today's session with my topic, which is on tax harvesting. So I'll quickly share the slides. All right. So as we have discussed, the topic for the discussion is tax harvesting. Not very popular, but let's try to understand what tax harvesting is all about and how, when it started, and how, as investor, we can take advantage of this tax harvesting. सी टैक्स पे करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. ऑल ऑफ अस हम चाहते हैं कि हम कम से कम टैक्स पे करें एथिकल वेज में. हाउ वी कैन रिड्यूस आवर टैक्स बर्डन, बट वी हैव टू पे टैक्स ऑन द इनकम वी जनरेट. जो भी हम परचेजेस करते हैं उस पर हमें जीएसटी का आउटफ्लो होता है. एंड सिंस 2018 all the gains which we make on long term capital gains are taxable on the long term capital gains. So ये सारी चीजें हमको जानते हुए we let's understand what is tax harvesting. कैसे हम टैक्स हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे टैक्स को बचाया जाता है, क्या टैक्स हार्वेस्टिंग होता है. तो इससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है एंड हम कैसे इसका इस्तेमाल हमारे पोर्टफोलियो में कर सकते हैं टैक्स रिड्यूस करने के लिए. सो टैक्स हार्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकें या उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकें और किसी किसी केसेस में कैसे हम उसको जीरो तक ला सके. इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग. बट बिफोर वी गो टू टैक्स हार्वेस्टिंग हमें जानना होगा कि हाउ लॉन्ग टर्म टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड, कि कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स होता है और कितना टैक्स होता है. आइए हम समझते हैं. सो शुरुआत हुई थी 2018. लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जी जेटली ने जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को री इंट्रोड्यूस किया था इक्विटीज पे. और पहले टिल बिफोर 2018 देयर वाज अ कंप्लीट एग्जेम्पशन ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. सो लॉन्ग टर्म हम किसे कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर, जब आप एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा आप जब आप इन्वेस्ट करते हो एंड उस पे आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर होता है. सो अप टू 1 लाख
जो एज पर द न्यू रूल्स इज व्हाट यू गेट एग्जेम्पशन. सो अगर आपका प्रॉफिट एक साल के बाद मोर देन 12 months की होल्डिंग पे अगर आपका प्रॉफिट इज मोर देन 1 lakh, then you are liable to pay long term capital gain tax at the rate of 10%. सो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म हम किसे कहते हैं, इक्विटी और नॉन इक्विटी जैसे इनकम टैक्स डिफाइन करता है. तो आइए हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किसे कहते हैं. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपने इन्वेस्ट किया है इक्विटीज या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है, इफ यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड उसके बाद अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हो, तो जो गेन्स जो प्रॉफिट्स आपको वो आपके पोर्टफोलियो में मिलता है, उस प्रॉफिट्स को हम डिफाइन करते हैं एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो the other side of the story is less than 12 months is called as short term capital gain, and this is for equities और equity mutual fund. So again बहुत लोगों को because अभी बहुत सारे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन जो सेबी ने डिफाइन किया है, एनी म्यूचुअल फंड which invest in 65% of their AUM in equity and equity related securities are considered as equity mutual fund. और जब आप उसे 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके आप जब सेल करते हो, उस पे जो प्रॉफिट आप बनाते हो, उस प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं. सो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपने म्यूचुअल फंड में अभी शुरू किया है, तो हो सकता है कि आपका ईयरली प्रॉफिट और जो कैपिटल गेन्स है वो इमीडिएटली जो 1 लाख का थ्रेशोल्ड है उसको टच नहीं करेगा, बिकॉज इनिशियल ईयर में यू आर स्लोली बिल्डिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी. बट एक स्टेज आएगा लॉन्ग टर्म में जब आपका जो प्रॉफिट है वो काफी क्लोज आ जाएगा 1 लाख के, एंड फिर उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा. सो जो टैक्स हार्वेस्टिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, आइए हम जानते हैं. इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और अगर आप 5,000 रुपए एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड हमने एज्यूम किया है रिटर्न की जो CAGR रिटर्न अगर आपको 12% आपके पोर्टफोलियो में मिलता है, सो आपका जो कैपिटल गेन जो है विच विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 1 लाख इन अबाउट 5th ईयर. सो जो आपकी 5वें साल में आप जो देख रहे हो 1,05,518, you are crossing that 1 lakh threshold. So till that time आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं था, बिकॉज आप 1 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर थे. वही अगर 15,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वही कैपिटल गेन आपका 3rd ईयर में ही 1 लाख के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा. सो कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स ज्यादा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में या मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की जो टाइम है वो कम होगा और उनको हार्वेस्टिंग की जरूरत उतनी ही ज्यादा पड़ेगी. सो व्हाट इज टैक्स हार्वेस्टिंग, जो अगर हम इसको सिंपल फॉर्मूला से समझे, तो अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आप उसको सेल करते हो, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस कैपिटल गेन्स है उसको आप फिर उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ताकि आपका जो टैक्स है वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ही रहे और आपको टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने से आप बच सकते हो. तो इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन 5th of January 2018, and he started it by putting 3 lakh rupees in his mutual fund equity scheme. And after 1 year, on let's say 10th Jan, so more than 12 months, 10th Jan 2019, he redeemed that amount with a profit of about 75,000. So 3 lakhs plus 75,000, so the capital gain works out to be 75,000. So ये long term capital gain है because the person stayed for more than 12 months. Now अगर आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं कि इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, so the long term capital gain tax here will be yes 0. Why? Because the 75,000 is well within the limit, exemption limit, which we have for long term capital gain tax, which is 1 lakh of rupees. Okay, now moving forward, now this person has redeemed this 3,75,000, but he reinvested back in the same scheme.
and we know that it takes 3 working days to get your money. So let's say he does that on 13th January of the same year, which is 2019. So now his reinvestment amount has become 3,75,000. And after another year passed by, and now 20th Jan 2020, he checked his value and he found that it is 4,60,000. So what he's doing now, again he's redeeming the same value and he's making a profit of 85,000 this time. Okay, now again, because this 85,000 is less than 1 lakh rupees, he will still not pay any long term capital gain tax this time also, right? Because it is less than 1 lakh limit. But now, suppose this guy has not booked his profit initially in the first year itself, and he continued invested from 2018 to 2020. In that scenario, how did the picture look? Let's see here. If he invested 3 lakhs, which was our initial amount, and if he continued, stayed invested till 20th Jan 2020, where he redeemed the entire value in one shot, which is 4,60,000, then his total profit, the total capital gain, would have been 1,60,000. And because it is more than the exemption limit of 1 lakh, the threshold limit of 1 lakh, definitely he need to end up paying tax. And how much tax he need to pay on this is 10% of the extra amount, which is 60,000. So approximately 6,000 is what he would end up paying. So in nutshell, when we do harvesting, in if we break down our profits and reinvest that in the existing scheme, we get two advantage. One, that we have reset our investment date, and second, we are again starting fresh with the entire investment along with the capital gain. So by doing this, what we are trying to achieve is we have saved 6,000 in this example. Like this, depending on your investment, whether you are a one time investor or if you are a SIP investor, you can utilize this strategy in your investment. What you need to keep track is the threshold limit of 1 lakh, and the moment you think that the profit is going close to that, you book your profit and again reinvestment. The strategy only works if you are reinvesting. It's like farming. We are plowing, we are putting seeds, and then it takes 6 months, the farmer gets the crop, he harvests it, and again he puts back new seeds. So similarly, for investors also, we have to book this profit but again put it back so that we can take the advantage of this tax harvesting. There is a similar concept which was prevailing called टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जहां पे हम क्या करते हैं कि समझिए हमारे एक पोर्टफोलियो है जहां पे हमने कुछ 50,000 का प्रॉफिट बुक किया है दो स्टॉक्स बेच के, बट मेरे पास 2-3 सिक्योरिटीज ऐसी है जो परफॉर्म नहीं किया है, जहां पे मैंने 20-25 हजार रुपए के लॉस पे बैठा हूं, तो मैं वो 20-25 हजार का लॉस बुक करूंगा और जो मेरा 50,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया था वो 25,000 मेरे प्रॉफिट से मैं एडजस्ट करके मैं टैक्स पे करता हूं. सो इसको कहते हैं लॉस हार्वेस्टिंग. यू बुक योर लॉसेस and again reinvestment your capital into stocks which you think may be performing. So but इसके लिए आपको set off के rules जानना बहुत जरूरी है, because capital losses can be set off only against capital gain. बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मुझे कैपिटल लॉस हुआ है तो मैं हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी इनकम से उसको सेट ऑफ कर दूंगा, तो दैट इज नॉट अलाउड. कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स. एंड सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो 12 मंथ से पहले अगर आपको कुछ लॉस आपने बुक किया है, दैट कैन बी सेट ऑफ बोथ विथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो 12 महीनों के बाद अगर आपने कोई लॉस बुक किया है, उसको सेट ऑफ करने के लिए आपको कोई दूसरी सिक्योरिटीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ही आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो. सो लॉन्ग टर्म लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. एंड द थर्ड वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो लॉन्ग लॉस हार्वेस्टिंग में बहुत मदद करती है, विच इज द कैरी फॉरवर्ड रूल. अगर आपने इस साल 15,000 का कैपिटल लॉस बुक किया
और आपके पास उसको सेट ऑफ करने के लिए कैपिटल गेन्स नहीं है, तो आप उस लॉस को अगले 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो हो सकता है कि इस साल आपका प्रॉफिट नहीं है, अगले साल अगर आपको 30,000 का प्रॉफिट होता है तो ये 15,000 जो आपने लॉस पिछले साल बुक किया था उसको आप 30,000 से सेट ऑफ करके फाइनली आपको सिर्फ 15,000 पे टैक्स पे करना होगा। सो दिस सेट ऑफ कैन बी कैरी दिस कैपिटल लॉस can be carried forward for 8 assessment year. So knowing these rules are very handy in tax loss harvesting. So if you are a new investor और आप शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिंग करियर को, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, यू विल कम क्लोज टू थ्रेशोल्ड लिमिट, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड इफ यू आर अ इक्विटी इन्वेस्टर और आप काफी एग्रेसिवली ट्रेड करते हो, then you can use the tax loss harvesting and make sure that you reduce your total capital gain liabilities. So with this, I would like to end my session. And as I already told you that we will take all the questions at the end. So please start putting your questions, doubts in the comment box. And now I would want to invite Mr. Saurabh, who will take us through the another tax efficient ways of investing into mutual funds. Over to you, Saurabh. Thank you, Rishabh. Thank you for a very insightful start. I'll just kind of start to share my screen, and then we'll just start off. Just a moment. Yes, so thank you, viewers, thanks for sparing some time and listening out to us. So, as Rishabh explained, tax planning is extremely important, and it goes hand in hand with your investment planning. So, I thought I'll just share with you some slides on how mutual funds are a little more tax efficient vehicles to plan your taxes, and there are few specific products within the mutual fund regime that can help you plan your taxes better. So just to start with, I thought I'll just because there could be some of the investors who are very novice about how mutual funds work, mutual fund कैसे काम करते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ slides we can always present in terms of how mutual funds work, and then I'll talk about the taxation part of the mutual fund. So what happens is that there are investors, and you as investors you have choice to put into directly into equity markets, or there are kind of vehicles of mutual funds wherein a lot of investors come, they pool their money, and there is an expert set of team with fund manager, research, investment team, that is the asset management company, which pools your assets. So everybody, for example, there are 10 people, they want to invest 10 rupees each, and they give that money to a certain AMC as part of a fund. The fund will have about 100 rupees, and उनके पास 100 rupees आ जाएंगे. तो फंड मैनेजर बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस, हिज स्टाइल और उसका जो रिसर्च है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कंपनीज की, उसके अनुसार वो सिक्योरिटीज या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. ये मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ, डेट का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, फिलहाल हम इक्विटी की बात कर रहे हैं. तो वो इन्वेस्ट सिक्योरिटीज में होगा, जो कि अगर आप अच्छे से अच्छे लंबे अवधि के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश कर पाएंगे अपनी समझ और एक्सपीरियंस और वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को अच्छी तरह से यूज करके, तो वो आप रिटर्न जनरेट करेंगे और उस पोर्टफोलियो जो रिटर्न्स है वो आपके इन्वेस्टर्स को वो वापस हो जाते हैं. तो 10 इन्वेस्टर्स ने आपको 10 रुपए दिए, हर एक ने टोटल आपके पास 100 रुपीज आया. एज अ फंड मैनेजर आपने उनको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उन कंपनीज ने आपको अगर समझिए 20% रिटर्न दिया, तो आपका 100 का जो AUM है वो 120 हो गया. तो हर इन्वेस्टर को अगर मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो हर इन्वेस्टर के पास 12-12 रुपए आ जाएंगे. डेफिनेटली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एक्सपेंस रेशियो, जो कि छोटा एक अमाउंट होता है, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर्स AMC को मैनेज करने के लिए वो भी एक एंगल जो आपको देखना चाहिए. Coming to the next slide, why invest in mutual fund? So there is a very important question people ask कि म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करें, हम सीधा खुद भी निवेश कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. आप जिस आदमी के पास समय है और जानकारी है, अनुभव है, उसको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड सेबी आल्सो ऑलवेज ट्राइज टू प्रमोट स्मॉल इन्वेस्टर्स थ्रू वेरियस प्रोटेक्शन स्कीम्स एंड अदर थिंग्स. बट अगर जैसे हम में से ज्यादातर लोगों के पास समय नहीं है, हमारा एक्टिव वर्क एक्टिव जॉब कुछ और है,
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सेविंग पूल अच्छा रिटर्न जनरेट करे, जिससे कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकें, या फिर हम किड्स का एजुकेशन 15-20 साल में जो आएगा उसके लिए प्लान कर सके, इन्फ्लेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए आपके लिए म्यूचुअल फंड है, जिसमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं कि भाई हाँ किधर किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सके। देयर इज अ सेइंग दैट डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, राइट। तो वो एक ध्यान में रखा जाता है, फिर रिटर्न पोटेंशियल देखा जाता है। उसके बाद आप देखें कि इक्विटी भी बहुत डाइवर्सिफाइड होती है, बहुत हेट्रोजेनस चीज होती है इक्विटी। मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, ग्रोथ स्टाइल होता है, डार्क स्टाइल होता है। तो अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो पाता है। और अगर आप कॉस्ट भी देखें तो कॉस्ट अब विद डायरेक्ट प्लान्स एंड रेगुलर प्लान्स में भी हैं, वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, पर आप डायरेक्ट प्लान्स में देखें तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको इतना अच्छा सर्विस अवेलेबल होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। डेफिनेटली लिक्विडिटी है, आप आज उसको एनएवी को रिडीम करने के लिए आप फंड में डालेंगे, आपको 1 या 2 दिन में आपके पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है कि आप देखें और म्यूचुअल फंड को समझें और उसको वाइजली यूज करें अपनी टैक्स प्लानिंग के पर्पज की वजह से। नाउ अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो काफी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। एवरी मंथ फैक्ट शीट पब्लिश होता है, और काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देता है, आप कब एग्जिट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं। चॉइस ऑफ स्कीम्स भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, और विद चॉइस ऑफ स्कीम सेबी ने कुछ अच्छे पॉलिसीज लेके आए हैं लास्ट 2 साल में, जिससे कि ओवरलैप ऑफ स्कीम्स बहुत कम है, और फंड्स को निर्देश है कि आप ज्यादा फंड लॉन्च ना करें, लेकिन अच्छे स्कीम्स लॉन्च करें, जो कि हर एक स्कीम अलग हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप की स्कीम 4-5 लॉन्च करते कंफ्यूज करने के लिए इन्वेस्टर्स को। इट इज वेरी वेल regulated. I can assure you that it is one of the most strictest regulated industries in India. And so people really do take care of your money. SEBI is very, very stringent, and there are definitely tax benefits, which I'll talk to you later. Your money can do more with mutual funds. So अभी ज्यादातर जो रिटेल जो निवेशक होते हैं, उनके पास एक चैलेंज होता है कि उनको एक मुश्त जो उनको इन्वेस्ट करना है उसका अमाउंट छोटा है, किसी का 2,000, किसी का 5,000। लेकिन अगर आप देखें अच्छी बड़ी कंपनियां, उनके शेयर्स का जो वैल्यू होता है वो काफी बड़ा होता है। और अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपए में बहुत डिफिकल्ट है कि आप किस तरह से कंपनी ले पाएंगे। 2,000 रुपए में आपको शायद 0.75 शेयर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की मिल पाएंगे, जो आप ले नहीं पाएंगे। उसी के अगेंस्ट अगर आप वो पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आप देखेंगे कि वो पैसा आप म्यूचुअल फंड को देते हैं। म्यूचुअल फंड क्योंकि वो काफी सारे लोगों से रिसोर्स को पूल करते हैं, वो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। I'll just restart the share screen. हाँ, तो म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, विच इज मोर टैक्स एफिशिएंट। तो आप देखें कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो रेगुलेशंस ने और गवर्नमेंट ने उसको डिजाइन किया है, वो एक टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर आप मार्च में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता जो मार्च फॉल था, वहां से वो स्टॉक आज 60% अप है, और अब आपको लगता है कि वो एक्सपेंसिव हो गया है, आप उसको बेचना चाहते हैं। तो अगर आप उसको बेचेंगे, क्योंकि अभी 1 साल नहीं हुआ है आपको निवेश करके, तो आपको उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में उस पैसे को डालते, और म्यूचुअल फंड उस पैसे को स्टॉक्स में डालता, और उस स्टॉक्स ने 60% रिटर्न दिया है, और एज अ फंड मैनेजर उसको लगता है कि स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गया है, अगर वो उनको बेचेगा लेकिन आप म्यूचुअल फंड को ना बेचें, तो आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफी एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। कैपिटल गेन्स टैक्स हमेशा इन्वेस्टर के हाथ में दिया जाता है। So as a fund manager, I can always sell and buy and sell stock depending upon valuations very quickly,
एंड नॉट फियर अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो मैं अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया है, मैं अपने फंड में उसे बेच दूंगा, थोड़ा कैश क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर 1 year you can sell and you can take benefit of long term capital gain tax. You don't need to pay short term capital gain tax. तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप वैसा नहीं कर सकते। सेकंड है कि जो अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस बजट में जो डिविडेंड पे जो रूल्स चेंज हुए हैं, उसका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। कि अगर आप देखें कि अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी नहीं काटती है, डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी द्वारा, और आपका जो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट है उसके बेसिस पे आपका डिविडेंड टैक्स आपके सेल्फ असेसमेंट पे लगता है। नाउ अभी क्या होगा कि जैसे आपको अगर डिविडेंड मिला किसी कंपनी से, आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया और कंपनी ने डिविडेंड दिया, और आप हम में से ज्यादातर का जो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट है करीबन 35% पे है, तो आपका टैक्स डिविडेंड के ऊपर 35% है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड को वो डिविडेंड मिलता है क्योंकि वो सर्टेन स्टॉक्स को ओन करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं देना है, तो वो टैक्स म्यूचुअल फंड उस डिविडेंड पे नहीं देगा, और वो उसके एनएवी में ऐड हो जाएगा। और आप जब भी उसको 1 साल के बाद बेचें, तो आपको सिर्फ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा। तो डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से भी म्यूचुअल फंड काफी एफिशिएंट व्हीकल है कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के फ्रेमवर्क में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ईएलएसएस, जिन पे मैं थोड़ा बात करूंगा अब आगे जाते हुए, जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और टैक्स सेविंग के ऊपर। टैक्स सेविंग प्रोडक्ट फंड्स क्या होते हैं? एसेंशियली वो एक बिल्कुल म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन उसमें एक तो सेक्टर कैप नहीं होता। दे कैन इन्वेस्ट इन मिड एंड लार्ज एंड स्मॉल एवरी काइंड ऑफ। सो अभी क्या हुआ, सेबी हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट कि लार्ज कैप फंड्स इतना ही लार्ज कैप ले सकते हैं, 65% लार्ज कैप से कम नहीं ले सकते। डिस्पाइट अगर लार्ज कैप्स महंगे लग रहे हैं, तो भी उसको 65% पैसा लार्ज कैप में ही रखना पड़ेगा। सिमिलरली मल्टी कैप्स के लिए भी काफी सारे रूल्स सेबी ने बनाए हैं। टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में ऐसे कोई रूल नहीं है। तो फंड मैनेजर को अगर ऐसा लगता है कि लार्ज कैप एक्सपेंसिव है, ही कैन ब्रिंग डाउन प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज कैप एंड यू कैन फोकस ऑन मिड कैप्स, यू कैन फोकस ऑन स्मॉल कैप। तो होराइजन बहुत वाइड है फंड मैनेजर का इस प्रोडक्ट के लिए। तो आप अगर देखें किसी अच्छे फंड में जो मिड एंड लार्ज कैप के कॉम्बिनेशन में अच्छे से प्रोडक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, दैट कैन बी अ ग्रेट व्हीकल फॉर योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरी बात, ईएलएसएस आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है, जिसमें आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं 1,50,000 रुपीज तक, तो आपका वो स्ट्रेट अवे उसको आपका टोटल इनकम से रिड्यूस किया जाता है। तो एट अप्रोक्सीमेटली 30% टैक्स रेट हम रूल के लिए अगर यूज करें, तो आप 45,000 रुपीज अपफ्रंट बचा सकते हैं। एंड उसमें लॉक इन है, हर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में एक लॉक इन होता है, लेकिन ईएलएसएस हैज द लोएस्ट लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस हैज ओनली 3 year लॉक इन। आप अगर कंपेयर करें किसी भी और टैक्स सेविंग प्रोडक्ट से, इसका लॉक इन सबसे छोटा होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप इक्विटी में 3 years या उससे ज्यादा के लिए निवेश करें, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 3 साल बाद उसे बेच दें, लेकिन फिर भी अगर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, विद इन 3 years आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप पीपीएफ देखें तो वहाँ 5 साल है। एनएससी वगैरह जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें तो आजकल 6 साल 6.5 साल का टाइम पीरियड है। इंश्योरेंस में और भी लंबा होता है। This is the most kind of shortest period where you can get your money back with kind of lockdown finishing in 3 years. ये जो 3 year का जो लॉक इन है, ये एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी लेके आता है। क्या होता है कि जैसे इक्विटीज आर वॉलेटाइल बाय नेचर। आज आपने इन्वेस्ट किया, 10% गेन होते आपको लगे यार थोड़ा सा पैसा उसमें से निकाल लूँ, लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं रह पाता। आप डेली चेक करते हैं उसके वैल्यूज को, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए। इक्विटी को हम हमेशा कहते हैं कि वो एसेट क्लास तभी है जब लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए। अगर आप उसको छोटी अवधि के लिए 3 महीने 6 महीने 9 महीने के लिए देख रहे हैं, तो वो एक मोर स्पेक्युलेटिव क्लास हो जाता है। तो जो 3 year का लॉक इन है, ये सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेके आता है इन्वेस्टर की, भाई अब ले लिया है, अब 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हैं, और जो सीएजीआर जो इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म, वो आप देखेंगे कि कितना अच्छे से प्ले होता है इसमें। तो ये एक डिसिप्लिन, इन्फोर्स डिसिप्लिन भी लेके आता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बीइंग एन ईएलएसएस स्कीम, बिल्डिंग वेल्थ एंड सेविंग टैक्सेस का ग्रेट कॉम्बिनेशन आता है, एंड इट इज वेरी वेल सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज कि 3 साल का लॉक इन खत्म हुआ, आप पैसे निकाल लेते हैं। हमारी हमेशा एडवाइस होती है कि आप ऐसा ना करें। आप उसको 5 year 7 year 10 year 10 year 15 year के पर्सपेक्टिव से उस पैसे को लिया है, आप उसमें डालिए। मैंडेट खत्म हो गया है तो भी उसमें रखे रहने दीजिए, क्योंकि वो फंड मैनेजर अपना काम कर रहा है, कंपनी जिसमें उसने इन्वेस्ट किया वो अपना काम कर रहे हैं, और आपका पैसा
ग्रो होगा लॉन्ग टर्म में, मतलब जिस तरह से अर्निंग ग्रोथ होगी कंपनी की और इकोनॉमी ग्रो होगी वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होगा। नाउ अब आप डेफिनेटली एक अगला सवाल ये हो सकता है कि आप एक अच्छे ईएलएसएस स्कीम में क्या देखें। सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू ईएलएसएस बट ये भी across when you are investing in mutual funds, you should see stability of the investment team and the consistency in style. Right? And those are the two risks that mutual funds carry. Stability of the investment team, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि until unless you have a processed approach or a team approach, अगर एक फंड मैनेजर स्टार फंड मैनेजर फंड से निकल गया तो फंड परफॉर्मेंस रियली सफर्स। दैट शुड नॉट हैपन। सो यू शुड एंश्योर दैट एक स्टेबिलिटी हो इन्वेस्टमेंट टीम में, वो फंड मैनेजर काफी समय से हो, और एक सक्सेशन प्लानिंग हो कि भाई अगर वो फंड मैनेजर किसी वजह से छोड़ के जाता है तो वो प्रोसेस है कि भाई उसी प्रोसेस से वो फंड मैनेज होगा और फंड की रिटर्न में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए स्टाइल में कि भाई अगर अब वो बोल रहा है कि वो वैल्यू स्टाइल से पैसा मैनेज करेगा तो उसी स्टाइल से करे। ऐसा नहीं कि वो जब ग्रोथ ग्रोथ स्टॉक्स रिटर्न दे रहे हैं तो ग्रोथ की तरफ चला जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा, देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग विथड्रॉड ऑन बोथ साइड्स बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो ये दो फैक्टर्स आप देखिए। लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखिए क्रॉस मार्केट साइकिल्स कि किस टाइप के मार्केट में फंड ने कैसा रिटर्न दिया, जो वो प्रॉमिस कर रहे थे वैसा उन्होंने रिटर्न दिया है कि नहीं। तो एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो अगर उस प्रोडक्ट का 8 से 10 साल का मिनिमम, तो वो प्रोडक्ट आप उसको आप जरूर देखें, क्योंकि 10 साल कंप्लीट, 1 या 2 साइकिल हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को, एक छोटी साइकिल, तो वो एक अच्छा फिल्टर है आप देखने के लिए। प्रेफर अ फंड विद लो टर्नओवर रेशियो। और फैक्ट शीट देखें तो एक नंबर पब्लिश होता है टर्नओवर रेशियो का कि वो फंड मैनेजर कितना पोर्टफोलियो को चर्न कर रहा है। नाउ यू आर गिविंग हिम मनी विद अ 3 year लॉक इन एंड ही इज प्रॉमिसिंग यू लॉन्ग टर्म कि भाई आपको लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट होगा, एंड इक्विटी इज एन एसेट क्लास इन लॉन्ग टर्म। बट क्या वो खुद लॉन्ग टर्म सोच रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब जैसे अगर आप क्वांटम टैक्स सेविंग फंड देखें जो कि हम मैनेज करते हैं, मैं मैनेज करता हूँ, उसका जो चर्न रेशियो है करीबन 20% है। यानी कि एक स्टॉक जब मेरे पोर्टफोलियो में आ जाता है तो कम से कम 4.5 से 5 साल रहता है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उस स्टॉक को देख रहा हूँ, तभी मैं उस जाके उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं मेरा पोर्टफोलियो को 3 टाइम चर्न कर रहा हूँ 1 year में, then there is a gap in thought process, right? तो वो एक बहुत अच्छा फिल्टर होता है आपके ईएलएसएस स्कीम चुनने के लिए। एंड पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्ट क्वालिटी कंपनी होना चाहिए। आजकल देखिए सभी को पता है कि अच्छी कंपनियां कौन सी हैं, एटलीस्ट टॉप 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन कंपनी सबको पता होती है। तो आप देखिए कि लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एक्सपोजर कैसा है, कितना चर्न, तो मैंने आपको बताया, वैल्यू किधर है, किस ऐसा तो नहीं कि फ्रॉथी मार्केट में महंगी कंपनियां ले रहा है वो फंड मैनेजर। वो सब चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिए, और ये जो 4 फिल्टर्स हैं उनको यूज कीजिए अच्छा ईएलएसएस खुद के लिए लेने के लिए। थोड़ा सा समय में क्वांटम टैक्स सेविंग के ऊपर भी बताना चाहूंगा कि हम लोग जो मैं मैनेज करता हूँ एज पार्ट ऑफ द फंड मैनेजमेंट टीम, it's an ELSS product. It saves your tax under ATC as I explained. We have a very strong bottom up selection process. तो हमारा स्टाइल ये नहीं है कि एक थीम अच्छी लग रही है कि भाई सोलर अच्छा लग रहा है अब सोलर की जाके कंपनियां ले ली जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारा स्टाइल ये है कि देर आर एट एनालिस्ट एंड 4 फंड मैनेजर अक्रॉस द इक्विटी स्कीम्स, एंड वी लुक एट ईच ऑफ अस लुक एट डिफरेंट सेक्टर्स। उस सेक्टर्स में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, कौन सी कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, मोट क्या है उस बिजनेस का, वो सब ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, वो सब ध्यान रखते हुए हम स्टॉक पिक करते हैं। तभी हमारा चर्न रेशियो थोड़ा कम होता है पोर्टफोलियो का, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी क्रिएट अ डिसेंट पोर्टफोलियो विद अ लॉन्ग टर्म आउटलुक। वी आर स्ट्रिक्टली वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। वैल्यू में हमेशा प्रेफरेंस कैपिटल प्रोटेक्शन को थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। बीइंग एन इक्विटी प्रोडक्ट वो भी वॉलेटाइल होगा बिकॉज मार्केट बीटा हर इक्विटी प्रोडक्ट के लिए होता है, लेकिन प्रेफरेंस है कि कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और कैपिटल जो एप्रिसिएशन है वो बाई प्रोडक्ट हो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल का। इट्स ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सेविंग योर टैक्सेस एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो ये हमारा रिटर्न है क्वांटम टैक्स सेविंग फंड का। अगर आप ब्लू लाइन देखें, बिकॉज लास्ट 2 या 3 साल से वैल्यू इन्वेस्टिंग थोड़ा वोग में नहीं था, तो नियर टर्म परफॉर्मेंस थोड़ा सफर किया है हमारा, बिकॉज कुछ सेलेक्टेड कंपनियां बहुत अच्छा कर रही थी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस, लेकिन वो बहुत महंगी थी और हम उस रिस्क में फंसना नहीं चाहते थे। हमारे इन्वेस्टर्स को हम एक्सपोज नहीं करना चाहते थे हाईली एक्सपेंसिव कंपनी, जो कि आपने देखा लास्ट 6 महीने में काफी नुकसानदेह साबित हुआ है।
और लास्ट 6 महीने में आप देखिए थिंग्स हैव बीन इंप्रूविंग, सो द वैल्यू कैटेगरी स्टार्टेड टू डू वेल अगेन, एंड लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए वैल्यू स्टाइल आई थिंक फिट्स द बिल. इफ यू लुक एट globally, long term investors are generally focused on value because it saves you from a little volatility in the equity markets. So that's about it from my side. I think I'll pass the baton to Shikhar. Shikhar has a few interesting slides to present. And maybe Shikhar, you can take it from here. Thank you. Thank you so much, Saurabh. नमस्ते, वेलकम बैक. आप सबका ग्रो हमारे अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट में स्वागत है. I will be talking to you about the Groww as a product, about what all we offer, हमारे पास और क्या क्या हैं और हम क्या क्या लाने वाले हैं. And if you have any questions about investing or personal finance or about Groww, please continue leaving them in the chat box. We are getting a lot of questions, so we'll be addressing that after my presentation. Saurabh, can you please stop presenting? Just 1 minute. We'll just, yeah. Okay, so let's get started. जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, ग्रो को स्टार्ट किया गया था इस मकसद से, इस मिशन से कि इन्वेस्टिंग आसान हो और हर तरह का इन्वेस्टिंग कर पाए लोग. जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टिंग ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं. other things coming on the platform. So हमारे पास जैसे बहुत सारे नए ऑफरिंग्स आ रहे हैं, जैसे हमने रिसेंटली गोल्ड ऐड किया था, राइट? तो इसी तरह सो the aim of Groww is to ensure that आपके पास सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या जितने ज्यादा हो सके उतने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, राइट? And that it be super simple, that it have excellent customer support, level playing field हो. जरूरी नहीं है कि अगर आप if you're investing a small amount, you don't get great service, जो कि बाहर होता है. अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप if you're a normal investor like most of us, तब आपको उतनी अच्छी सर्विस शायद ना मिले. तो ये सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ग्रो को स्टार्ट किया गया था. तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ग्रो के बारे में. जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा. यहाँ पे जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, इट इज 100% पेपरलेस. अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो वो भी हम कर देंगे. आप घर बैठे बैठे लैपटॉप या स्मार्टफोन यूज करके ग्रो पे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. हमारे पास अभी ऐप पे 3 ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड गोल्ड. तो जब आप खोलेंगे तो ये वाले स्क्रीन पे आएंगे. ऊपर आपको 3 टैब्स दिख रही हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड. जैसे से आप उन टैब्स पे टैप करेंगे तो उनके अलग अलग एक्सप्लोर स्क्रीन पे जाएंगे. तो जैसे ये है म्यूचुअल फंड का एक्सप्लोर स्क्रीन. यहाँ पे कलेक्शंस हैं, पॉपुलर फंड्स हैं एंड सो ऑन. इसी तरह अगर आप स्टॉक्स वाले पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे इंडिसेस हैं, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स एटसेट्रा हैं. और इसी तरह गोल्ड का दिखेगा. अभी गोल्ड में एक डिजिटल गोल्ड का हमारे पास ऑप्शन है, ऑगमेंट गोल्ड. इसी तरह हम और भी ऑप्शंस ऐड करेंगे. लाइकवाइज जब आप किसी फंड के पेज पे जाएंगे, किसी म्यूचुअल फंड के पेज पे जाते हैं, तो इस तरह का पेज दिखता है. नाउ अगेन, एज वी सेड, वी वांट टू मेक इट इजी एंड सुपर ट्रांसपेरेंट, राइट? सो to ensure that it is very easy to get information, to ensure that it's very very transparent, what we have done is हमारा जो जितने भी हमारे पेजेस हैं उनपे सारे इंफॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से, बहुत आराम से मिल जाएंगे. सो जैसे देखिए ये म्यूचुअल फंड का पेज है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड, उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो रिटर्न्स हो, एक्सपेंस रेशियो हो, फंड मैनेजर का नाम हो, या AUM हो, उस फंड के कंपेटिटर फंड्स का नाम क्या है, उनके साथ कंपैरिजन करें तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है. ये सारी डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड के पेज पे मिल जाएंगी. और इसी तरह आपको स्टॉक्स के पेज पे भी उस स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड सिमिलरली गोइंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑल्सो गेट all details with regards to
ऑगमाउंट गोल्ड. सो एज आई सेड, अभी हमारे पास ऑगमाउंट गोल्ड है, ऐसे ऐसे और ऑप्शंस आएंगे, और जो जो ऑप्शंस आएंगे उनके भी ऐसे ही गोल्ड पेज होगा. नाउ ग्रो पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ही स्टार्ट करें. बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ मंथली पेमेंट करना. ये जरूरी नहीं है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. ये डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड मींस योर इन्वेस्टमेंट्स. आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको डैशबोर्ड पे दिखेंगे. यहाँ पे भी 3 टैब्स हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड. म्यूचुअल फंड का आपको ये दिख रहा है. इसी तरह स्टॉक्स और गोल्ड पे जाएंगे तो आपके जो स्टॉक्स और म्यूचुअल और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स, वो दिखेंगे. तो यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के नाम है, और किसी भी एक म्यूचुअल फंड के नाम पे जब आप टैप करेंगे तो आपको एक अलग स्क्रीन पे ले जाया जाएगा, जहां पे आपकी सारी ट्रांजैक्शंस उस म्यूचुअल फंड के साथ आपको मिल जाएंगे. एक पासबुक की तरह होता है. वहां पे फोलियो नंबर मेंशन होगा, एवरेज एनएवी मेंशन होगा, कितने बार विड्रॉ किया, कितने बार इन्वेस्ट किया, वो सारी डिटेल्स. और उस पेज के ठीक नीचे ये 2 बटन रहेंगे, इन्वेस्ट मोर एंड सेल. इन्वेस्ट मोर मतलब उसी म्यूचुअल फंड में और पैसा लगाना, और सेल मतलब उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना, यानी कि रिडीम करना. ग्रो पे पेमेंट करने के सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं आपको. यूपीआई ऐप से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. इंपोर्ट एंड स्विच. सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर फीचर ऑन ग्रो. मान लीजिए आपने कहीं और इन्वेस्ट करा है, किसी और के थ्रू या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ग्रो पे नहीं करा है, और आप चाहते हैं कि वो ग्रो में आ जाए, आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह आ जाए, तो आप इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं. इंपोर्ट मतलब importing those mutual funds to grow. तो ये भी घर बैठे बैठे ही होता है. इट्स वेरी सिंपल. आप अपने डैशबोर्ड में जाइए, म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में, और सबसे नीचे जाइए, वहां पे आपको इंपोर्ट का बटन दिखेगा, and just follow the instructions. You'll easily be able to track your mutual fund. Now the second is switch. स्विच का मतलब है, जो मान लीजिए आपने जो बाहर आपके इन्वेस्टमेंट्स थे जिसको आपने ग्रुप पे मूव किया, वो रेगुलर प्लान में थे जहां आप कमीशन दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अब वो डायरेक्ट प्लान यानी नो कमीशन वाले प्लान में स्विच कर लें. तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं. पहले इंपोर्ट करना होगा और फिर आप उसको स्विच कर सकते हैं. If you have any doubts, please reach out to us. Email us on support@grow.in. और इसके अलावा और भी जो आपके पास डाउट्स हो या कुछ जानना चाहते हो, कॉमन क्वेरीज, ये सारी डिटेल्स आपको हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, आपके ऐप में और वेबसाइट में. और हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन यूज करके आप टिकट रेज कर सकते हैं. कॉल और चैट का भी ऑप्शन है आपके पास वहां पे. प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब. YouTube is a very good resource for new learners. There are a lot of videos there. जगदीप सिंह आते हैं वहाँ, हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो लगाते हैं, and it could the videos usually are for stocks and sometimes for mutual funds. So if you're interested in that kind of content, you should definitely check out the YouTube channel, Groww YouTube channel. We are one of the highest rated investment apps in India. We have over practically every mutual fund. ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा. हमारे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं. हम सेबी और एम्फी रजिस्टर्ड हैं, और हम 256 बिट एन्क्रिप्शन का यूज करते हैं सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा को स्टोर करने के लिए. एंड वी आर ऑल्सो एन ISO सर्टिफाइड कंपनी. With that, I come to the end of my presentation. We will now take questions that all of you have left in the comment section. Thanks, Shikhar. That was quite informative about the Groww. And thanks, Saurabh, for making it very simple to understand how easily we can take advantage of funds like ELSS and can save tax. So there are a lot of questions regarding tax structures and investing. So Saurabh, I would like to start, though you have very clearly explained it in the presentation. If you would like to add, if investor wants to invest in ELSS, how do identify the best ELSS? Because there are so much of variety available, so many choices. So though you mentioned about consistency and investment style, any quick check you would like to give it to our investors? Yeah, जैसे मैंने explain किया ऋषभ कि there are 3 or 4 points which are critical. One is definitely the style and consistency and the longevity of the investment team, because when first of all, when you are giving money, it's a 3-year lock-in money. You cannot take the money back, so you have to be very careful. It is like lending money to someone.
where you cannot take the money back in expectation of return. आप जैसे किसी को आप उधार देते हैं तो आप थोड़ा होमवर्क करते हैं, राइट? सिमिलरली आप अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट कुछ रिटर्न चाहते हैं तो आपको उसी लेवल का होमवर्क वहाँ करना चाहिए कि भाई कैसे लोग हैं, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, फंड मैनेजर इज ए न्यू गाय विद हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए फ्यूचर नोबडी नोज, राइट? लेकिन क्या है कि आप हिस्ट्री में जाकर ही समझ सकते हैं कि कैसी चीजें रही हैं, लेकिन अगर कोई फंड मैनेजर चेंज हुआ या स्टाइल चेंज हुआ देन हिस्ट्री बिकम्स इररेलेवेंट। तो वो चेंजेस आप अगर एक बार देख लेंगे तो इट विल बी यूजफुल, प्लस ए लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है द प्रोडक्ट हैज। कभी कभी क्या होता है कि नए एनएफओ को बहुत हॉट तरीके से प्रपोज किया जाता है कि ये एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट देन दैट प्रोडक्ट हैज नॉट सीन द टेस्ट ऑफ टाइम। तो मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप उसको देखें कि भाई 8-10 साल की साइकिल में, वेयर इक्विटी साइकिल्स आर लाइक 5-7 ईयर साइकिल, तो प्रोडक्ट कैसा रहा है, और अगर वो वैल्यू स्टाइल था तो फ्रॉथी मार्केट में वो शायद थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, जो कि करना भी चाहिए उसे। अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड है जो कि आपको ठीक लगता है तो उस हिसाब से मिड एंड स्मॉल। और फिर जैसे कुछ कंपनियां, जैसे सबको पता होती है कि कुछ कंपनियां अच्छी हैं तो वो क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चर्न रेशियो। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम आस्किंग यू फॉर अ कमिटमेंट ऑफ 3 years, डोंट टेक द मनी बैक, थिंक लॉन्ग टर्म इन इक्विटी, राइट? लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो में मैं ये कर रहा हूँ कि हर महीने मेरे 30-40% जो स्टॉक्स हैं पूरे चर्न हो रहे हैं, तो फिर आई एम नॉट डूइंग द सेम थिंग एज आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू। तो ये 2-4 चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिए और उसी टाइप से थोड़ा देखिए कि आपका माइंडसेट और जो फंड मैनेजर का माइंडसेट में एक लाइक्लीहुड दिखता है, तो आप उस ये लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए ये 3-4 पैरामीटर्स के जरिए। आई थिंक इट विल मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट चॉइस एंड इट विल गिव यू अ गुड डिसेंट। थैंक्स सौरभ, दैट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। एंड इन्वेस्टर्स को हम बताना चाहेंगे कि ये जो सौरभ ने बताया वो फैक्ट शीट के जरिए आप हर महीने आपके फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आप जान सकते हैं। बिकॉज देखा गया है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स रिटर्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अदर फैक्टर्स लाइक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो गया या फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो थैंक्स सौरभ फॉर दैट। Shikhar, next question is for you. There is a investor who wants to know, can I invest for 15 to 20 years SIP through Groww app? Because I think he's finding it that we can only invest for 5 years. So is that so? Would you like to clarify on that? Yeah. You are on, you have to unmute, Shikhar. We get this question a lot. देखिए, what happens is when you click on 1 year, 3 year, 5 year, those are the returns. Those are not the period that you can invest for. When you start an SIP, it is unlimited. It runs till you cancel it. There is no maturity period. There is no fixed period. You can cancel it anytime, and if you leave it, it will run forever. The 5 years is not for the SIP. Is just जो 5 साल आपको दिख रहा है वो बस रिटर्न्स के 5 साल है। अगर आपको SIP करना है, जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा। All right. And another question is, somebody is asking, is Aadhaar mandatory for stocks? So do they need to have? Aadhaar is mandatory. We can't do without the Aadhaar. Sure. Saurabh, coming back to you, somebody wants to know Nifty at these levels. Will it be good if they divest to gold? Will that make a good strategy at this point in time? देखिए जो एसेट एलोकेशन होता है दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट? तो आप निफ्टी का लेवल देख के अपना लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन प्लान नहीं कर सकते, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग है। गोल्ड इज अ वेरी important part of your asset allocation because it's kind of insurance against things going wrong. मेरी स्लाइड में वो चार्ट नहीं था because I thought we will stick to the topic of tax planning on mutual funds. But लेकिन अगर आप देखें डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बेनिफिट आता है। लास्ट 2 years 2019 and 2020 YTD gold has given you the best return, but that was not the case for maybe the previous 3 years, right? So it brings in a very strong diversification benefit. So our suggestion always is that 8 to 10% or a plus minus of 50% should always be in gold. As far as Nifty goes, yes, indices are at a long-term, kind of life highs. So one has to be cautious. You have to stagger your investments. But I can tell you that our experience has been that the broader market is still providing a lot of opportunities. So for as an active manager, he is not looking at the pure index Nifty or BSE Sensex, and he's looking at the broader markets of 300-400 companies of universe of
those stocks. There are pockets of value that you are getting, and you can buy those names and keep it for a longer period of time for good capital appreciation. But yes, markets appear, at least on the indices level, appear to be expensive. Thanks, Saurabh. The couple of questions which I'll take, I think related to what I discussed in my presentation. What is the long-term capital gain tax? So जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी और नॉन इक्विटी दो बाइफर्केशन होते हैं, और अगर अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज़्यादा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो जो भी प्रॉफिट आप जनरेट करते हो एंड वॉट एवर प्रॉफिट विच यू बुक, अगर आप इन्वेस्टेड हो और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है. बिकॉज आई कैन सी अनदर क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है कि अगर मेरे दो म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे मैंने 60,000 और 60,000 इन्वेस्ट किया है, मेरा प्रॉफिट है, तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? तो अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तभी वो जो 1 लाख का थ्रेशोल्ड है वो आपको मेंटेन करना होगा. तो 1 लाख के ऊपर जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में आपका प्रॉफिट आता है उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. एंड सेकेंड इज विल हार्वेस्टिंग इम्पैक्ट माई कंपाउंडिंग? सो हार्वेस्टिंग आपकी कंपाउंडिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है, बिकॉज आप जब भी विड्रॉ करते हो यू इमीडिएटली इन्वेस्ट. नाउ यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि अगर आप आज विड्रॉ कर रहे हो तो 3 वर्किंग डेज लगते हैं आपको अमाउंट री इन्वेस्ट करने में. So the other ways is if you have surplus with you, then you reinvest the surplus immediately on the same day when you are giving for redemption. अगर वो नहीं है, then for those 2-3 days, that is the difference which you might get in long-term compounding. But otherwise, harvesting does not impact the compounding. Now, another question. Somebody again, Shikhar, I think we get this every week on the SIP increment. I think some viewers have joined today. They want to know क्या मैं अपनी SIP का amount बढ़ा सकता हूँ in Groww app. So देखिए, अगर आप SIP के अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो जो एडिशनल अमाउंट है उसके साथ नया SIP स्टार्ट कर लीजिए उसी म्यूचुअल फंड में. There is no limit to number of mutual funds you can start, number of SIPs you can start in one mutual fund. उसी में स्टार्ट कर लीजिए, या अगर वो नहीं करना है तो जो एग्जिस्टिंग SIP है उसको कैंसिल करके नया SIP स्टार्ट कर लीजिए. देयर इज मतलब टॉप अप का ऑप्शन नहीं है, बट उसकी आपको जरूरत नहीं है सच. आई मीन ये कैंसिल और मतलब सेकंड SIP करके आप आराम से ये काम कर सकते हैं. Yeah, another question which is very similar is SIP pause feature. Somebody wants to know. पॉज फीचर अभी नहीं है, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और जब आप रिज्यूम करना चाहते हैं तब आप फिर से उस SIP को स्टार्ट कर सकते हैं. There's no pause feature. Somebody wants to know about the US stocks, so how they can get the updates on that. Updates as in, okay, I'm not clear what the so they want to know is asking. Can we maybe start, already it is started, the US stocks they want it's on the website it's available. I think updates might be referring to the maybe the digest we send out or something like that. Okay. अगर आपके I'm sorry if I have not answered your question. अगर आपको ये question का answer नहीं मिला, please follow on question लिख दीजिए comment section में and I'll try and answer. Okay. So Saurabh, next question is for you. Investor wants to know whether to invest in one scheme or it's always better to have diversification and 2 to 3 schemes if they are investing in ELSS. No, it is always a good idea to diversify your basket. But diversification does not. You cannot do diversification blindly, right? As I've always told, there are different styles in the market. There are different caps in the market. It does not mean diversification does not mean that you select 3 fund houses and get 3 LSS without seeing the composition, the style, and other things. And then because you will end up having the same stocks. Ultimately, the exposure to the same stocks say come if you don't diversify the style or the caps, right? So it is always good to have a diversified basket, not specific for ELS, but also overall mutual fund. Have a good combination of a value fund as your anchor, a 20% allocation over there. Build around it a good mid cap basket, and then a growth basket and similar. So a good 3 to 5 mutual funds is appropriate for me or you. A good diversification, diversifying across caps, across styles. So that is how you diversify. You might require some financial advice on that because most people are not
attuned to what is the style is or what the cap restrictions are and other things. But I would suggest that blind diversification won't help. You have to diversify with some logic. But diversification is always helpful and always advised. Yeah, that was very helpful. Are we expecting any corrections? Viewer wants to know market at these levels. Look, so there are risks to the market for sure. Now, when we talk about correction, markets, what is the market factoring? Right. First, need to understand that markets क्या factor कर रहे हैं? Markets factor कर रहे हैं एक recovery, economic recovery जो हो रही है. There is no two thoughts about it. Things are picking up, right? आपके इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, EMIs लो हो गए हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट या फिर कार सेल्स वगैरह सब इम्प्रूव हो रहे हैं. पर उसको रिस्क क्या है? मेरी नज़र में दो रिस्क हैं जो कि इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए. एक है कोविड का रिस्क, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो जो वैक्सीन है उसको सबके हाथों में पहुंचने में कुछ समय है. एंड हर कंट्री में आप देख रहे हैं कि सेकेंड या थर्ड वेव आ चुका है. लॉट ऑफ देयर आर लॉकडाउन्स दैट हैव हैपेंड. अभी तक थैंकफुली इंडिया में वैसा नहीं हुआ है. काफी मोबिलिटी हो गई है लोगों में. उसके बाद भी एटलीस्ट द नंबर सजेस्ट दैट द एक्टिव केसेस आर डाउन फ्रॉम 1 million to 3 lakhs. दैट इज वेरी वेरी गुड. बट वो एक फियर है कि जो पूरे वर्ल्ड में हुआ है वो हमारे में भी हो सकता है. एंड इफ दैट इंड्यूसेस सम लॉकडाउन इन सर्टेन पॉकेट्स, market have not, it's not factoring that at all. As of now, market is factoring one way recovery for at least 3-6 months at a good FY22 and 23. So any jerk over there, any setback over there, markets will correct for sure. So that is one. Second is definitely the interest rate cycle should be in favor. Interest rate cycle globally. So globally, the money tap is on, a lot of money. And just before the start of our webinar, we were talking about that $10 billion kind of monthly flows. If that kind of tap continues, that if that tap suddenly closes because of a global event, that is also second thing that could lead to market corrections. And third, very sticky data, and which is the most worrisome data in all this economic recovery parameter, is the unemployment rate. Unemployment rate when the lockdown happened had peaked to 20%. It fell to 6.5-7%. But it is not improving from there on. In a healthy economy, unemployment rate should not be more than 4%. Over last 3 months, the unemployment data is not improving, and I think this month is shot back to 10%. Unless that data improves, there will not be a sustainable recovery, and there are bound to be disappointments on the consumer side and then further on the capex side as well. So that is a very important data for the sustainability of this whole thing. So I believe it's not total risk free, and there could be a possibility. You should wait and watch. If you're looking at a lump sum investment, wait it out, stagger your investment. I think there will be opportunities to invest into equities for long term. Okay, so if you are looking to invest for lump sum, then you can stagger it. That's the advice. Don't jump in at these levels. But there are risks, as Saurabh mentioned, so we need to be watchful about our investments. Now, somebody wants to know about if we are removing our money in less than 1 year, do we have to pay 15% tax? Yes, short-term capital gain tax is at 15%, so that is will be charged. And somebody wanted to know about ETF. So ETF are exchange traded funds. They are a passive way of investing into our markets and one of the economical way of investing into markets. And I think Quantum has a couple of products on ETF front. Saurabh, would you want to share something? Yes, so Quantum has a Nifty ETF, but Nifty, as I told, the index appears to be expensive, so please stagger out your investment. ETF are a very low cost option where you don't want to take an active call, you want to pay a very low fees and you want to get an exposure on the equity side. So that is the Nifty ETF that is available for you. There is a gold ETF. And all through our programs and webinars and interactions with investors, we always said that an exposure to gold is important. It might not look fashionable at times. So 2015, 16, so like 2018 was not a great time for gold, but gold has its days. When things go really bad, the way it happened this year, and things were really bad last year as well, when a few banks faced problem in India, those are the times when gold will shine as a sparkle in your portfolio. So gold ETF is a product, low cost option to buy into gold, and it's backed by actual physical gold in the vault at Quantum at least. So you should always buy some gold ETF. So these are the two ETF products that Quantum has, and you should have really develop some understanding over those products and look into whether that fits into your financial plan. Sure.
Shikhar, again, one question which we used to get very frequently in the initial days, but I've seen this after a long time. What if Grow will stop functioning? What if something happens to Grow? Is my money safe? Investor wants to know. Yes. So your money is absolutely safe. I'll tell you why it is safe. आपका जो पैसा है वो हमारे पास नहीं रहता है, वो म्यूचुअल फंड के पास भी नहीं रहता है. Okay, even the mutual fund cannot do anything with. They cannot run away with your money. None of that is possible. These things are very regulated. यहाँ पे सेबी बहुत बड़ा मतलब they have very sharp eyes for these things. जब ग्रो बंद होगा, in case ऐसा होने वाला है नहीं, but अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ. अगर ऐसा होता है, आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनको म्यूचुअल फंड के वेबसाइट या ऐप से एक्सेस कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको इफ यू वांट सम आपके अपने आश्वासन के लिए आप जानना चाहते हैं, तो अभी भी जो आपके ग्रो के इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके वेबसाइट में सेम पैन नंबर डाल के देखिए, आपको वो सारे म्यूचुअल फंड्स वहां भी दिख जाएंगे. राइट? सो दैट विल ऑलवेज बी देयर. अगर हमारे को कुछ हो जाता है, आपके पैसे को आप वहां से एक्सेस कर ही सकते हैं बिल्कुल आराम से. देयर वोंट बी एनी इशू विद दैट. Thanks, Shikhar, for that reassurance. I think it'll certainly help. Now, another question to Saurabh. Somebody wants to know, they are looking to invest for long term, for especially retirement and something related to child education. So, what, when they are building their portfolios, what to be looked into? I am sure you've told about multi asset. So, will that also play an important role when you're looking for long term? Yes, so typical basket of products that you own, you need to have capital appreciation in your portfolio. So a combination of equity and gold is always good combination for investment horizons of plus 5 years. So how the structure works is near term to have a safe money when things could go really wrong in your life in terms of jobs and other things, urgent requirement of money. 12 to 24 months of your monthly cash flow should be in a very safe liquid fund or a savings bank account or an FD of a maybe a government bank, right? That is kind of safety net for you of 15 to 24 months of your kind of monthly cash requirements you should have there. Then whatever money you require for next 1.5 2 years of your financial goals should be either in a kind of multi balance fund kind of multi asset product or debt product, very safe again. Right? Anything which goes beyond 3 years and going forward 3 years, 5 years, 7 years, you need that kind of compounding story, right? And a margin of safety also. So a good equity product portfolio, a diversified equity product portfolio, 3 or 4 or 5 mutual funds based upon your comfort or direct equity if you are comfortable with that, plus a combination of gold is a great thing for your longer term goals. This is how we say to people, and that this is not a very straight jacketed thing. It does not fit every plan. Every individual is very different. But this is a typical plan where you can work around with based upon your own peculiarities. But that is how you think. Thanks, Saurabh, for that insight. Somebody wants to know, so I'll take this question because it's again related to harvesting. That how does it work when people are investing through SIPs? So when अगर आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आपका SIP के यूनिट्स 12 मंथ क्रॉस कर देते हैं, so you need to keep a tab on the units which are 12-month old, and you can do harvesting on those units. But SIP may, because there are sometime exit loads imposed, so please make sure that you are giving due importance to all the charges and the exit loads, and that should not adversely impact your portfolio performance. Shikhar, next question to you. Somebody wants to know if we can invest using NRI bank account, and can that be taken as a primary bank account in Groww? No, unfortunately, at this moment, you cannot have NRI bank account attached with Groww. So perfect. So with this, I think we have taken all the questions. I would like to thank Mr. Saurabh for joining with us again and giving his insight on tax saving and harvesting. Thanks, Shikhar, for your inputs on Groww. Thank you so much, viewers, for joining again on a Friday evening with us. We will catch you with you again next week with a new topic and a new guest speaker.
So till then, stay safe, stay healthy. Thank you, everyone.